Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast Boys Secondary Schools and Colleges, our project of Iqra Education System. My dear brothers, we are back with the online classes as unfortunately the government has announced the closure of schools and educational institutions. If you remember, we went through unit number 1 and 2 in our last online classes, and then we covered unit number 3 in our physical classes here in our school and branches. We will be starting unit number 4, Pakistan and National Pride. In this first video lecture, I will take you through the words and English meanings and Urdu meanings of the keywords given in our chapter number 4 in reading comprehension exercise number 3 on page number 85. Page number 85 पर आपको exercise number 3 reading comprehension की given है my dear students, और वहाँ जो words given हैं उनमें से 8 words मैंने board पर लिखे हैं यहाँ. There are around 24 words which I will be telling you the English meaning and Urdu meaning, and I will home assign you the sentences on these keywords. ये जो वर्ड्स हम क्लास में करेंगे यहाँ पर और उसकी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, उसके सेंटेंसेस बनाने का काम मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा. मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉपी फॉर्मेट प्रेजेंटेशन. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट ऑनलाइन सेशन में भी और फिजिकल क्लासेस में भी आपको बताया था कि कॉपी प्रेजेंटेशन यानी कि रजिस्टर को मेंटेन कैसे करना है. हमारी सबसे पहली वीडियो जो थी लास्ट वीडियो सेशन में, ऑनलाइन वीडियो सेशंस में, वो थी कॉपी प्रेजेंटेशन पर ही. सो यू कैन गेट बैक टू वीडियो नंबर 1 in the last online video sessions and get through all the instructions I provided you. I am briefly telling you all these instructions once again here. आपको सबसे पहले तो कवर चढ़ाना है रजिस्टर्स पे. जिन बच्चों के रजिस्टर्स पे अब तक कवर नहीं चढ़ा वो सबसे पहले कवर कर लें अपने रजिस्टर्स को प्रॉपरली और उसके ऊपर अपना नेम टैग लगा लें. नेम टैग में आपका नाम आएगा, क्लास, सेक्शन. ये 3 तो मैंडेटरी फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, और उसके अलावा आप अपनी ब्रांच लिख सकते हैं जो भी आपकी ब्रांच है, और अपना फादर नेम भी लिख सकते हैं. आफ्टर दैट यू विल मेंटेन योर इंडेक्स. अपना इंडेक्स मेंटेन करना है. इंडेक्स मेंटेन करने का तरीका यही है कि आपके हर यूनिट में 2 से 3 चीज़ें हैं. मसलन वर्ड्स मीनिंग आप लोग करते हैं अपने रजिस्टर में, फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं, और लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस होती हैं, और राइटिंग एक्सरसाइजेस होती हैं. ये 4 चीज़ें तो हर चैप्टर में हैं ही. But according to the reduced syllabus breakdown given by our Board of Education Karachi, कुछ चैप्टर्स में राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है, कुछ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज प्रैक्टिस है, कुछ में तीनों चीज़ें गिवन हैं. I have already told you, in fact all the teachers have told in the classes कि each चैप्टर में क्या चीज़ें आएंगी और किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे. इंडेक्स मेंटेन करने के बाद आपको चैप्टर में टाइटल पेज बनाना होता है, और टाइटल पेज के बाद आप डबल पेज पर वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और सेंटेंसेस करते हैं. ये जो आप लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, डबल लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पर, ये मार्क कर रही है कि आपके पेज, 2 पेजेस का सेंटर ये है, रजिस्टर का सेंटर ये है. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का पेज है और ये राइट हैंड साइड का पेज है. तो लेफ्ट हैंड साइड के पेज पर आप 4 कॉलम्स बनाएंगे. पहला कॉलम वर्ड्स का जो कि नॉर्मल होगा, एवरेज उसकी विड्थ होगी. उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा सा कॉलम, फिर इंग्लिश मीनिंग का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इंग्लिश मीनिंग थोड़ी बड़ी होती है, और फिर उर्दू का कॉलम जो उर्दू मीनिंग का कॉलम वो उसका वही साइज होगा जो आपके वर्ड्स के कॉलम का साइज है.
So my dear students, these are the keywords given. I have taken these keywords from your book, page number 85, exercise number 3 of vocabulary. The first word is dynamic. Dynamic means having a lot of energy. This is an adjective, and in English it means having a lot of energy, and in Urdu it means mutaharrik. यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी शख्स अगर डायनेमिक है तो उसका मतलब कि उसमें बहुत एनर्जी है, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग, इट कीप्स ऑन डूइंग सम एक्टिविटीज, इट इज मूवेबल, और इन उर्दू वी कैन से मुतहर्रिक. द सेकंड वर्ड इज steadfastness. Steadfastness is a noun and it means firmly staying on one path. Firmly staying on one path. And in Urdu it means sabit qadmi. Steadfastness is noun form of steadfast. Steadfast means sabit qadam. If I say I am steadfast, it means I firmly stay on one path. I do not deviate, I do not divert, I remain stable, strong on something which I have already decided or thought. तो steadfast का मतलब साबित कदम, ऐसा शख्स जो एक दफ़ा किसी काम को करने का इरादा कर ले तो फिर उसके ऊपर डट जाता है, उस काम को करने पर लग जाता है, उसे steadfast कहते हैं. That is adjective. और steadfast का जो noun form है steadfastness, which is written before you on the board. Number 3 is guiding principles. This is a noun phrase, guiding principle, and it means rules that set the direction. ऐसे उसूल जो आपके रास्ते का तयन करते हैं. रास्ते से मुराद ये वो रास्ता नहीं कि मैं अगर सी व्यू जा रहा हूँ तो जिस रास्ते से जा रहा हूँ सिर्फ रास्ता वही मतलब नहीं. यहाँ रास्ते से मतलब ये है कि अगर मैं किसी काम को करने का कोई इरादा कर रहा हूँ तो उस काम को किस तरीके से करूँगा, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, इसको भी हम डायरेक्शन कहते हैं. तो रूल्स दैट सेट द डायरेक्शन, ऐसे उसूल जो हमारे किसी काम का तयन करें कि हमें वो काम कैसे करना है, उसे हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. इन उर्दू इट मीन्स रहनुमा उसूल. नंबर 4 इज अनपैरेलल्ड. अनपैरेलल्ड एडजेक्टिव है और इसकी मीनिंग है so great that there is nothing like. कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई दूसरी मिसाल ना मिलती हो, जो बेमिसाल हो, बेनज़ीर हो, उसे हम unparalleled कहते हैं. The unparalleled efforts of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah in order to get Muslims a separate nation or a separate state. So unparalleled means bemisal, benazir. Number 5 is undesired. Undesired is also adjective and it means unacceptable or unwelcome. In Urdu, na pasandida ya na qabile qabul. Unwelcomed, unacceptable, and then the key word is undesired. Number 6 is acumen. Acumen is a noun and it means ability to understand quickly and clearly. तेज फहमी या बारीक बीनी. तेज फहमी या बारीक बीनी. I wrote तेज फहम बारीक बीन. Let me correct it. Here you are my students. तेज फहमी, बारीक बीनी, and in simple words we can also call it farasat. Fahm, farasat, acumen, ability to understand something quickly and clearly. Number 7 is proponent. This is also a noun. It means a person who supports a cause, a person who supports somebody or something. That is called proponent. In Urdu, हामी या हिमायत करने वाला. While number 8 is polarization. The word polarization has come into existence from the word polarity.
आपने वर्ड पोलैरिटी या पोलर सुना होगा. Polarization is the root word for polar or polarity. Polarization is a noun and it means separation into two groups. और अगर हम इसको मजीद क्लियर करें तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी सेपरेशन इनटू टू ऑपोजिट ग्रुप्स, जिसकी उर्दू मीनिंग है तख्तीब या तकसीम. पोलराइज्ड सोसाइटी का मतलब कि ऐसा माशरा जो दो हिस्सों में बटा हुआ हो. पोलराइज्ड, पोलर, पोलैरिटी, ये सारे वर्ड्स पोलराइजेशन से ही बने हैं. सो पोलराइजेशन मीन्स सेपरेशन इनटू टू ग्रुप्स. In Urdu it means takhteeb ya taqseem. Now I will write down 4 more words on the board. As I told you, there are around 24 words in this chapter which we need to go through for their English and Urdu meanings, and we will make sentences because these words will help us out in understanding the passage. When there are 24 words, I will not take you through all 24 words in one video or in one lecture. We have divided these 24 words into 2, from 1 to 12 and then 13 to 24. Okay, so I'm gonna write down 4 more words on the board here along with their English and Urdu meanings, and we will discuss the English and Urdu meanings. Give me a second. Okay, my dear brothers, here we have the remaining 4 words for today's lecture. Word number 9 is aspirations. This is a noun and it means strong desires. आरज़ू, तमन्ना या कोई बहुत शदीद ख्वाहिश, उसे हम कहते हैं aspirations. I have aspiration to be a good Muslim. मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है, मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं. So aspirations means strong desires, arzu ya tamanna. Number 10 is envisioned. This is a verb in its past participle form, in its third form, and it means imagined as a future possibility. तसव्वुर किया गया, यानी कि जिसके बारे में सोचा गया हो. For example, in 1940s, Pakistan was envisioned as a separate Muslim state. In 1940, Pakistan was envisioned as a separate Muslim state. पाकिस्तान को एक अलहदा मुसलमानों की रियासत के तौर पर 1940 में तसव्वुर किया गया था. Imagined as a future possibility. Number 11 is pluralistic. Pluralistic is adjective and it means groups of people living together. When different groups of people living together in peace, in harmony, that is called pluralistic. In Urdu it is called takfiri या आसान अल्फाज में इज्तिमाई. इज्तिमाई या तकफीरी, जब मुख्तलिफ ग्रुप्स, लोगों के मुख्तलिफ ग्रुप्स किसी एक जगह रह रहे हों और उनमें आपस में हार्मनी हो, ब्रदरहुड हो, पीस हो, सेरेनिटी हो, ऐसे माशरे को हम कह सकते हैं प्लूरलिस्टिक. नंबर 12 is discrimination. This is a noun and it means difference of treatment. इम्तियाज या फर्क, यानी कि different treatment with different people. That is called discrimination. Like it usually happens that people of the same group have discrimination for their people and for others. So that is called discrimination. In fact, discrimination in Islam is not allowed. It has no capacity in Islam. So discrimination means imtiyaz ya farq. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam crushed discrimination under his feet, removed discrimination, finished discrimination from the society, and this is what he taught us too.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्क्रिमिनेशन को, इम्तियाज़ को, फ़र्क को, डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट को ख़त्म किया। एंड ही हेटेड इट, उनको इससे नफ़रत थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये तालीम दी कि हम ये जो डिस्क्रिमिनेशन है या ये जो डिफरेंस ऑफ ट्रीटमेंट है इसको बिल्कुल भी इख्तियार ना करें। एनीवेज माय डियर स्टूडेंट्स, your homework for today, I'm going to write on the board. You have to make title page and you have to make sentences of keywords from 1 to 12. I have already told you how you have to make sentences. That's very easy to make. अगर कोई noun या adjective given है तो आप उसके sentences कैसे बना सकते हैं, मैं बोर्ड पर 2-3 मिसालें आपको देकर समझाता हूँ। So my dear brothers, this is your homework. Make title page of unit number 4, Pakistan and National Pride. And second assignment is make sentences from word number 1 to 12. Here I have given you some simple examples of sentences for noun and adjective. I have given you 2 examples of the word pluralistic and 2 examples of discrimination. The first example of pluralistic is that Pakistan is a pluralistic country. And second example is we live in a pluralistic society. And the first example for discrimination is there is no discrimination in Islam. And second example is I have no discrimination. So by giving you these 4 examples before you people on the board here, I mean to tell you that how you can make sentences of adjective and noun. Adjective और noun के sentences, simple sentences हम कैसे बना सकते हैं? is MR से भी बना सकते हैं, किसी main verb से भी बना सकते हैं, there is, there are, there was, there were से भी बना सकते हैं, have और has से भी बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि noun और adjective के सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ा के तकरीबन 7, 8, 9, 10 तरीक़ों से हम किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इज़ एम आर के सेंटेंसेस हो सकते हैं, देयर इज़ देयर आर के सेंटेंसेस हो सकते हैं, हैव हैज़ के सेंटेंसेस हो सकते हैं, और डायरेक्टली किसी वर्ब के साथ भी आप वो सेंटेंस बना सकते हैं। आई हैव गिवन यू ऑल 4 पॉसिबल एग्जांपल्स ओवर हियर ऑन द बोर्ड एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम फॉर वर्ड नंबर 1 to 12। जो वर्ब होता है उस वर्ब को आप टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। नाउन और एडजेक्टिव को आप इज़ एम आर, वॉज वर या हैज़ हैव या देयर इज़ देयर आर के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर्ब को आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है इन्विजन्स, तसव्वुर किया गया, इमेजिन्ड एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, दिस इज अ वर्ब, तो इसको आप चाहें तो एक्टिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो पैसिव वॉइस में भी यूज़ कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म एंड हिज टीम हैड इन्वेजन्ड पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म और उनकी टीम ने पहले ही पाकिस्तान को तसव्वुर कर लिया था। या यूँ भी कह सकते हैं पाकिस्तान हैड बीन इन्वेजन्ड एज अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। अगर कोई वर्ब है तो उसको आप किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में, और नाउन और एडजेक्टिव्स को इज़ एम आर के सेंटेंसेस में या देयर इज़ देयर आर के सेंटेंसेस में या हैव हैज़ के सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। यू हैव टू मेक सिंपल सेंटेंसेस एज सिंपल एज पॉसिबल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वी विल मीट अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर and in that we will cover around 12 more keywords with their English and Urdu meanings from word number 13 to 24. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.